call is now being recorded. ज्वाइन कर लिया है मैम। Good afternoon, Rahul. Good afternoon, Kavita. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Very sorry, got late. No, sir, it's okay. Sir, start करें. Yeah, we can start, please. Go ahead. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for finding time and visiting today's webinar. Welcome, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. Respected HOD sir, faculty members, my dear students, and invited keynote speaker, Mr. Prashil Soni, CSC Alumni Batch 2013 to 2017. I, Kavita Namdev, feel honored to welcome you all in today's webinar, Making a Career in Web Development. It is conducted in association with AITR Alumni Cell under Alumni Connect Series and ISC. Today is the wonderful day. We have our great guest speaker. Today, we are pleased to welcome a very special guest, Mr. Prashil Soni. It's a great pleasure for me to introduce such a dynamic and versatile speaker, Mr. Prashil Soni. He is presently working as a senior full-stack engineer at Paytm Insider, Pune, Maharashtra. He has completed his Bachelor of Engineering in Computer Science from AITR Indore in 2017. He worked as a software engineer with MasterCard, Zensar, Hotrex. He has excellent knowledge of web development. Mr. Prashil has great skill of front-end tool and server-side development tool. Today, he is going to deliver a webinar on making a career in web development. Now, without further ado, I would like to invite our special speaker for formal commencement of the session. Welcome, Prashil. Thank you, ma'am, and good afternoon, everyone. Okay, so without wasting any time, I'll just share my screen and we'll start with the webinar. And for the sake of understanding and easiness, I'll be delivering this half a bit in Hindi and half a bit in English. So it's gonna be a mix of Hindi and English both. So it's easier for us to understand this and grasp the concepts, as you say. So let me know if you are able to see my screen now. Yes, it is. Yes, Prashil. Okay, cool. So as introduced, I am Prashil. Like, I am 2017 pass out from Acropolis, and currently I'm working with Paytm Insider. I am a senior full stack developer here, and I lead a team of 3 people, and we work on the Paytm Movies platform. So we develop Paytm Movies platform so that other people can book, movie tickets and all that stuff. So I work on that stuff. So that is built on web technologies like React, Node.js, and everything. So my whole career of these 4 years that I've been in the IT industry, it's all around, web technologies and web development, and somewhat around Android and iOS development as well. So today I'm gonna deliver this webinar around that only, like how can you create your career in web development and stand apart from the crowd. And also, like, I think ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अगर मुझे सेकेंड ईयर में पता होती तो मैं अभी करियर में थोड़ा और आगे हो सकता था, बट स्टिल लाइक आई थॉट ऑफ इट एंड मैंने वो सारी चीजें कंपाइल करी है यहाँ पे जो एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ताकि you can carve your path ahead in your career. So that's why this webinar is here, and this is the topic of the webinar.
One thing I would like to ask before starting, I'll be asking multiple questions in between the webinar. So, ma'am, ये लोग कैसे respond करेंगे? Like they'll respond in the chat or unmute करके बोलने वाले हैं या how is this gonna go? अनम्यूट करके और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं दोनों. Okay, great. So, guys, if you have any questions, doubt in between, तो आप लोग सीधे या तो चैट में आप बोल सकते हो या यू कैन सीधे अनम्यूट एंड बीच में आप रोक के भी बोल सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया या फिर यहाँ पे डाउट है, इसकी जगह ये होता तो क्या हो सकता था एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, दैट्स टोटली ओके, वी आर ओपन टू दैट. एंड जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे दैट्स बेटर फॉर यू बिकॉज दिस इज अबाउट करियर. यू नो, हम जिस चीज़ के लिए शुरू से पढ़ाई करते हैं अबाउट अ जॉब, गेटिंग अ जॉब, गेटिंग अ गुड जॉब, so this is about that only. So ask a lot of questions. Don't hesitate. Like I'll put my best to answer all that questions. So let's move on with that. My first slide would be about what's gonna happen after you finish your college. तो कितने लोगों को पता है like how's the placement process goes in our college or in other colleges out there? Like what will happen once you finish your studies in college? Like how is the transition going to be from college to your job, like campus to corporate kind of stuff? Anyone like who knows the process, like कैसे होने वाला है? अभी तो हम लोग second year में, like next year third year, then final year तक placements आते हैं. You know, then we interviews and all that stuff goes on. और उसके बाद फिर joining आती है and फिर job लगती है. So anyone who knows the complete process of it, like how it happens? या बिल्कुल ही अननोन है, बस सीधे कॉलेज ज्वाइन करा है अभी और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस चल रहा है, haven't thought of job yet? करियर्स पोर्टल पे जॉब प्रोफाइल आती है, उस जॉब प्रोफाइल पे अप्लाई करते हैं. फिर जब अगर तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उनके कोडिंग राउंड्स होते हैं. किसी किसी में सिस्टम डिजाइन राउंड भी होते हैं, जैसे डी शो में होते हैं कुछ सिस्टम डिजाइन का राउंड. वो सारे राउंड क्लियर करने के बाद आखिरी का एक एचआर राउंड होता है और एचआर राउंड के बाद वो अपना डिसीजन बताते हैं. ग्रेट, ये एग्जैक्ट प्रोसेस है, मतलब यही होता है इंटरव्यूज में. So what happens actually is when you are in your final year, the college में companies आती हैं placement के लिए, and after that you know they shortlist you based on some written test or some objective test जो कि time bound होते हैं, जहाँ पे आपको आधे घंटे में 30 questions करने हैं. और उसके बाद फिर interviews होते हैं. Interviews के भी multiple rounds होते हैं, problem solving rounds होते हैं, system design rounds होते हैं, managerial round होते हैं, then HR rounds होते हैं. हर किसी का प्रोसेस अलग होता है, कहीं पे 2 इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो जाता है, कहीं पे 4 या 5 इंटरव्यूज भी लगते हैं. तो दैट्स द प्रोसेस यू नो आफ्टर कॉलेज. सो फाइनल ईयर के बाद, और उस प्रोसेस के लिए हमको अभी से प्रिपेयर करना होगा. व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज I've seen you know people or students in the college, like मैं भी वैसा ही था और हमारे बैचमेट्स भी सारे ऑलमोस्ट वही था कि when you come into final year ना, you run for coachings like aptitude की कोचिंग कर लेते हैं, इसकी कोचिंग कर लेते हैं, जावा की कोचिंग कर लेते हैं, and that thing works. Like ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, because there are companies that hire people in bulk, right, like TCS, Infosys, these companies hire students in bulk, like 200 300 100 बच्चे एक साथ recruit करे हैं. So वो coaching वाली thing, that short term preparation works, but एक बार you join the company, that doesn't work at all, because आपने 4 साल में जो तैयारी नहीं करी है वो आपने 4 महीने में करी है, और उसके बाद you happen to crack the interview and you go into a corporate life where you have to solve real world problems. Like you have to write softwares that people are going to use, real world softwares. Example के लिए, let's say you are selected in Uber and now you have to write a code जहाँ पे आपको कैब बुक करने का कोड लिखना है, and you're not able to write an optimized code for that, so people are going to get delay in booking their cabs. So ये इम्पैक्ट होता है आईटी इंडस्ट्री का रियल वर्ल्ड में. सो वी पीपल सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट? सो अगर हम उस चीज के लिए अभी से रेडी नहीं होंगे और लास्ट के 4 महीने में प्रिपेयर करके उसको क्रॉस ऑन करते हैं, तो these are the problems that people generally face in IT industry. So there is a very popular statistics around it कि 80-20 का रेशियो होता है. The 20% people in the IT company work do the 80% of work, और जो बचे हुए 80% होते हैं वो बाकी का 20% काम करते हैं. And that holds true for like every company in India, at least in India, because there are people जो सीधे concepts को mug up करते हैं and they just mug up the code and write it. So we don't want
that to happen with us because वो long term में sustain नहीं करता है और growth में बहुत hamper करता है. So that's why we don't want that to happen. So that was the process of placement के अगले 2 साल में आपके साथ क्या होने वाला है and how are you going to prepare for it. Next is we'll talk about the 3 Qs. The 3 Qs are, one is what is web development. That's what this webinar is all about. Why should I bother? Why should you bother about it? Like, why should I take care about what is web development and why should I learn it and how it's gonna make a impact on my career? Or the last question is, how can I make a career in it? So these are some important questions that you guys need to know or should know about it. So that's I'm going to answer in the subsequent slides. Anyone who knows already about what is web development? I know like the new guys are smart. Gen Z is very smart these days. So they know a lot of stuff. But anyone who can explain what is web development before I do? Like I just copy pasted a definition from Wikipedia that I don't want to read now. I'll just explain in my words, but before me, like anyone else who's going to answer this question. Means what is web development? What is web even? अभी I think कि final year में या third year में subject होता है. Web security, web design, I don't exactly remember the name, but yeah, web से related subject होता है. So you guys should know about it. So, web development is a type of a development in which we can do web design such as and design by using web development coding like HTML, CSS, JavaScript, and PHP with the help of MySQL, Python, and whatever it is. It can be used for designing forms and other databases which can be used for various major projects. Right, exactly. That's the definition of web development. Web development is a process like जहाँ जिसका यूज करके हम लोग एप्लीकेशंस, वेबसाइट, स्टैटिक पेजेस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब टेक्नोलॉजीज यूज करके हम लोग कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो कि people can use, right? Like Koयल said, like आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो उससे, तो you might have also used Google Forms. वो जिस टेक्नोलॉजी में बना है that is called web technology, और उसको डेवलप करने में जो प्रोसेस हुआ है that is web development, right? So दुनिया में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी ये वेब टेक्नोलॉजीज का यूज करके बनी हुई है. फेसबुक दैट वी यूज, इंस्टाग्राम दैट वी यूज, एंड उबर, नेटफ्लिक्स, एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट, ऑन इनसाइड क्रोम और ऑन योर फोन, everything is made up using web development. So if I say something like web development is the future of IT industry, so I'm not wrong in that sense. So that is what is web development. And there is like, I just copy pasted a definition from Wikipedia about it. Like it's the work involved in developing a website for the internet or the intranet. So whatever you see on inside your Chrome, inside your applications, even the native applications on your device, like Netflix is a native application, or some other applications like Uber वगैरह, ये सब कुछ web technologies का use करके ही develop किया है. And in short, if I say, सबका base एक ही है, that is they are built upon JavaScript. So this was about the first question, what is web development? And next is, why should you bother about it? Like, okay, if companies come into college for placement purpose, and what they ask is about Java, और Java हम लोग second year में पढ़ लेते हैं. अभी syllabus में होगा Java, right? Yes, sir. Okay. हाँ, तो हम लोग फर्स्ट ईयर में C++ पढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड ईयर में जावा पढ़ते हैं, एंड वेब डेवलपमेंट कहीं पे अभी सिलेबस में आता नहीं है हमारे. But as I mentioned, like it is the future of the IT industry, so we should bother about it, we should learn it. So there is not like कि Java के requirements नहीं है या Java developers के requirement नहीं है. It is there and वो हमेशा रहेगी और बहुत ज़्यादा requirement है. But it's like people are now shifting towards JavaScript and JavaScript based framework and web technologies. The reason being, this is scalable, this is cross platform and everything. What I mean to say is, अगर आप application को JavaScript में web technology का use करके develop करते हो, तो you can use it on
web browsers, you can use it on mobile phones, you can use it on TV, washing machine, everything, everywhere. Like abhi Google Assistant washing machines पे आने लगा है, or Alexa, Google Home, all these things, these are built around web technologies. So this is the future. So world is, shifting towards this. So that's why we should bother about it. Since it is not in our curriculum, not in our syllabus, so we need to, give some extra time and extra focus towards it to learn it and to gain some knowledge about it, so that when the companies come to hire you, your resume should stand apart. So when I was in my final year, I had an upper edge, like I was, recruited for an internship in hot pack systems in my second year of engineering. And वहाँ पे they people taught us about these web technologies. So they, they made us work on Ionic, Angular, and everything. So when I was in my final year, so everyone else was writing Java, C++, SQL, Hibernate, and all that stuff on their resume. And I was writing Ionic, Angular, JavaScript, HTML, CSS. So in the, bunch of 100 or let's say 150 resumes, only 3 or 4 resumes were there जहाँ पे वो web technologies mentioned थी. और companies अभी ये चाहती हैं कि उनको ऐसे developers मिलें जो क्या बोल सकते हैं उनको, जो diverse हो एकदम और versatile हो. For example, अभी आगे आने वाला है slide में that there are 2 or 3 kinds of developer, like front end developer, back end developer, and a full stack developer. So full stack developer is the one जो front end पे भी काम करता है, जो back end पे भी काम करता है, जो आपका DevOps भी संभालता है, जो deployments होते हैं server पे, कहाँ पे code को deploy करना है, और वो सारी चीजें. तो a full stack guy is one. So company want full stack people so that they can hire less people and they can make them work more. So that is why you should bother about it. Like this is the future and the world is moving towards it. There is one famous saying that anything that can be written in JavaScript will eventually be written in JavaScript. This means that, for example, abhi existing market mein there are 100 applications and 70% of it is written in JavaScript, the rest 30% of it is written in some other language, but can be written in JavaScript. So coming future mein, those people will have to move to JavaScript and migrate their applications, because it's the future and it's fast and snappy and everything. They're like feature rich, but when you compare it to, the legacy technologies. So that's a famous saying that I wanted to show you. Now, why should you bother about it? का एक statistics है मेरे पास. So Stack Overflow is a very popular website that conducts a developer survey every year, and they ask developers about which programming language you love the most. So this is a stat from 2020. 2021 का अभी हुआ नहीं है. So JavaScript is the most loved language. Most popular language amongst all the languages. So first one is JavaScript, second one is HTML, CSS, then SQL, then Python, and then Java, and then rest of the languages, right? So even the trends are showing this, that I was saying that this is the future and people are moving towards it. More people are learning this thing. Or the good thing about it is, जैसे Java में there is a learning curve you have. और कोई language आप pick करोगे, C#, there is a learning curve there. Means it takes some time to grasp the concept, object oriented और multi-threading क्या होता है, overriding क्या होती है, overloading क्या होती है, prototype क्या होता है, ये सब क्या होता है. But in JavaScript it's pretty simple. मतलब इतने errors भी नहीं आते हैं उसमें जितने आपको Java में गलत type define करने पे आ जाते हैं. So it's pretty flexible language and it's a pretty easy language to learn about. और the best thing about it is अगर आपने एक बार JavaScript पढ़ लिया है तो you can learn anything that is being made out of JavaScript. Like Angular आप सीख सकते हो, that is made of JavaScript. React you can learn. So you can learn any of the frameworks available out there in the market which are in demand right now. And like it's easy. So the learning curve is pretty low. Next thing is, why do we want to do a job? So that like we do a job for a salary, right? So for some motivation kind of stuff. So the average full stack salary of an engineer per year is 92,035 US dollars. So if we convert that 92,000 US dollars, so that converts to around 66 lakhs or 67 lakhs probably INR per year. So that's the package, average package of a full stack developer. But once you get a job in a good company, that matters. Like if you get a job in some small company in Indore or in Pune or in some other city, the company which is not that big, so you won't get
this much of package, but this is the median of package, like average kind of thing. So, this is where you can reach if you choose this kind of stream. So I'm not saying this is the only stream that you can go into. There are multiple, choices in front of you. You can become a full stack developer. You can become a Java developer. You can become a backend developer. You can be a database administrator. You can be a DevOps guy, system administrator, what to say. Or you can choose a totally different stream wherein you do not indulge with technologies much, but you want to manage people. So you can be a scrum master, you can be a TPM, that technical program manager, and all that kinds of roles are also there in IT industry. So IT industry में काफी सारी चीजें होती है और काफी सारे type के लोगों की requirement होती है. So this is just one kind of people that I am talking about. And like, if you have any kind of doubt, sir, coding is not my forte, I don't love it much, but I like, planning things out. Like project अगर start करना है तो I like कि हाँ इसमें हम लोग ये features दे सकते हैं. So if you are that kind of a guy or a girl, so there is also a role for you in the IT industry. So there are specific people who decide roles and responsibilities and features of product. So if you think you have that kind of skill, you can opt for that career path. And if you think you love coding, and you are passionate about web technologies, you are curious about how things work on the web, so you can you choose this career path, which I think is the best for now, like during these times. And this helps you get a high paying job in like high paying companies, like say Google, Amazon, Netflix, all the FANG companies, like, or FANG is Facebook also, Netflix also. So Uber, Paytm is also one of the companies, Mastercard is one of the companies. So these all companies are very large companies, and they pay you a handsome salary for the skills that you have. And for these skills, there are less people and more demand. So when the supply is less and demand is more, then automatically the price goes up. So the price of developers, like full stack developers, is going up and up day by day. So as I mentioned, like, अगर तुम लोग अभी final year में जाके देखोगे ना, तो out of 200 people in your batch, 250 people in your batch, you'll see कि 60 to 70% लोग सिर्फ Java पढ़ के ही आए होंगे interview देने के लिए. And they'll go into the interview and say कि yeah, I know Java, and they'll answer questions about Java, because that is what is expected out of a graduate. But if you go out of the way and learn something new, that will help you in getting a good job. So that also happened with me. Like, as I mentioned, I got an internship in second year, and that made me learn web technologies. So that I ended up in getting a very good job when I compare to my my mates. So that is one thing. Let's move on to the next slide. Okay, these are some famous applications that are built using JavaScript, basically a web development language. So Facebook, Netflix, Instagram, Uber, Twitter, LinkedIn, these are all built in web using web technologies. Instagram is built using React, that I use in my day-to-day job. Uber is also built using React Native, that people use in their day-to-day job. Netflix is built using React, and it performs pretty good. So it's a pretty good application. So, if you happen to learn this kind of technology, you open your pathways to one of these companies, and you can work for them, and you can like enjoy working there. The third Q, and the most important Q, like, how can I make a career in it? So abhi tak jitna bhi tha, what I explained, what I told you guys, I was just pretty basically I was boasting about what are web technologies, why should you learn it, and what is built in it, what is good in it, and what is bad in other technologies. I was basically doing that. But now we'll come to the main question of this webinar, like, how can you make a career out of it? Like, where to start? That's the question, because it's not in the syllabus, it's not in the curriculum. How I'm going to learn this, what to learn, what not to learn, where to start, all these questions I'm going to answer. But before that, I'm going to take a pause for a couple of minutes and allow you guys, if you have any questions till this point of the presentation about your career, about college, about placements, about companies, about anything, about me, even about college. So if you want to ask, like, I'm having a pause here for a couple of minutes, and then you can ask.
Sir, हाँ, good afternoon, sir. good afternoon. Sir, as you said that you have got an internship in second year only. So Mhm. can you please tell us that how did you get an internship and what extra skills were required to get placed in such a big company? Okay, yeah. So when I was in second year, like year 2015, we were fortunate enough a company in Indore called as Hotwax Systems, they started a program called the residency program, in which वो लोग क्या करते थे, वो लोग सारे colleges में जाते थे और second year students को hire करते थे internship के लिए, that too for 2 years, but that program lasted for only for 3 years और 3 साल के बाद उन लोगों को वो बंद करना पड़ा because of some reasons, because of some issues with colleges और वो full time part time वाला कुछ तो था, तो they had to close it down. So हम अपने college से हम लोग 3 लोग select हुए थे for that internship and extra skills में nothing was required. My basic understanding of Java उन्होंने पूछा था, which I was learning in my second year. उसके अलावा they asked me about apart from college मैंने technologies में और क्या क्या try किया है. So I was learning Android at that time. And like similar kind of webinar, मतलब तब webinar नहीं होते थे, तब face to face sessions होते थे. तो हमारे एक senior थे आकाश सर करके, आकाश चितलंगिया, उन्होंने एक Android पे webinar seminar दिया था and I happened to attend that और उसके बाद से I started developing Android applications. तो वो मैंने वहाँ पे बताया उनको interview में and that got the interview cracked. So extra skills is nothing, as I mentioned, के देयर शुड बी समथिंग इन योर रेज्यूमे जो आपको बाकी रेज्यूमे से स्टैंड आउट करता हो. अगर वहां पे 100 रेज्यूमे है तो आपका रेज्यूमे में कुछ एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो बाकी के रेज्यूमे में ना हो या बाकी 10% के रेज्यूमे में हो. तो दैट ना वो चीज रिक्रूटर का अटेंशन खींचती है अपनी तरफ कि दिस गाय हैज समथिंग डिफरेंट. और एज अ फ्रेशर जब कॉलेज से कंपनी बच्चों को हायर करती है तो दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू हैव एवरीथिंग लर्नड इन योर माइंड. वो ऐसा कुछ नहीं सोचते कि इसको ये सब आएगा तब मैं तभी हायर करूंगा. व्हाट दे सी इज द योर विलिंगनेस एंड योर स्पीड टू लर्न. एज इन जब आपको हायर करते हैं तो वो आपके अंदर ये नहीं देखते कि आपको जावा आता है या नहीं अच्छे से, आपको स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में डिफरेंस पता है या नहीं. नहीं, वो लोग ये देखते हैं कि इस बंदे या बंदी में लर्न करने की कैपेबिलिटी कितनी है. अगर मैं इसको कल उठा के किसी एक प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ तो ये कितना जल्दी उसको ग्रास्प करके और उस पर काम करके और मुझे आउटपुट देना शुरू कर सकता है. सो दैट्स व्हाट दे लुक फॉर, राइट? And when I told in the interview that I learned Android in a couple of months and now I'm developing applications into it, so that वो चीज उनको strike करी and then they selected me. And that happened with the other couple of guys as well. वो दोनों भी Android applications ही develop कर रहे थे. One of them is also working with me right now. So uh, so that's the thing you need to take care of. Like you need to stand out of the crowd. कुछ ऐसा करो कॉलेज लाइफ में या अलग से कॉलेज से हट के जो कि तुम्हारे रेज्यूमे में शाइन करे तुम्हारे लिए. सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग हियर. There is one more question. What was the first language you learned for web development? So मतलब second year तक तो my curriculum was same as you guys. I learned C++ in my first year, C++, then Java, then Android as I mentioned. उसके बाद when I was hired for internship now, so I used to learn Ionic. So Ionic is a framework that allows you to develop Android and iOS application, वो भी एक single code से. मतलब वेब टेक्नोलॉजीज का यूज करके ही, जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो जो आपके फोन में भी चलेगी, जो ब्राउजर पे भी चलेगी और जो एप्पल के फोन्स में भी चलेगी. सो द कंपनी मतलब उनको ऐसे चाहिए था कि एक कोड बेस में हम लोग सारे एप्लीकेशंस डेवलप कर दें. सो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड लर्निंग एंड दैट हेल्प्ड मी. और उसी चीज की वजह से आई गॉट इनटू वेब डेवलपमेंट. So that is what it is. Like that was the first language that I learned in web development. Any other questions? Or should we move on? Excuse me? Yeah. From a career point of perspective, what is more beneficial, like sticking to specific role जैसे iOS development हो गया या UI UX engineer हो गया, या फिर SD1 SD2 के roles जो general है जिसमें आप जाके सीखते हो कि उनका project क्या है? Okay. So let me tell you कि companies जब recruit करती है ना किसी को तो they release a JD that is called as job description. ठीक है? तो for example एक company है, let's say company X, उनका कोई project है, right? And they want के हमको project में और बंदे recruit करने हैं because
the team is being slow, हमको और लोगों की जरूरत है प्रोजेक्ट को डेवलप करने में. So they figure out कि हमको बंदा चाहिए तो उसके साथ requirements क्या क्या होनी चाहिए, मतलब उसको जावा आना चाहिए, उसको backend आना चाहिए, उसको database आना चाहिए. So they release a job description in which they release all these requirements कि हाँ ये सब requirements होना चाहिए. तो it's not like SD1 SD2 are not specialized in something, or UI UX engineer, or let's say backend engineer, they are specialized in something. Each and every individual has a specialization in something. अगर वो SD1 है तो he might be specialized in either Java or means backend related technology or front end related technology or some other technology. It's not like that कि अगर आपको SD1 का tag मिला है या SD2 का tag मिला है तो you can do anything, right? You have to have some kind of speciality in some way or the other in a language. Either it's backend or either front end or any other language. So to answer your question, yes, speciality is required. It's just about roles and responsibilities, not responsibility, just role के नाम का tag change हो जाता है. Like earlier, when I was in Mastercard, I was software development engineer, but now here they have different terminologies. So now I am a senior full stack developer. Earlier, when I was in Hotwax, I was enterprise software engineer. So सबके नेमिंग कन्वेंशंस अलग अलग होते हैं, बट काम सब अपना अपना वही करते हैं जिसमें उस बंदे की स्पेशलिटी होती है या फिर जो उसका एरिया होता है, राइट? जैसे माय एरिया इज वेब डेवलपमेंट, लाइक आई एम फुल स्टैक इंजीनियर, आई डू वेब डेवलपमेंट. समवन इज अ जावा इंजीनियर, समवन इज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, समवन इज अ डेवऑप्स इंजीनियर. सो सबका अपना अपना स्पेशलिटी होता है, उनका जस्ट डेजिग्नेशंस चेंज होते रहते हैं, एंड दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंपनी टू कंपनी बेसिस. Okay, thank you. Okay. Next, sir, which one is better, React or Angular? So that is a debatable question. I'm glad you asked it and you know about it. Second year student को React और Angular और ये सब कुछ पता होना, it's a good thing. So I work in React, and React is on boom these days. So that's what I say. Like, it's not because I work in this. I worked on Angular till January, and after that I switched my job, and now I'm working on React. So the one thing that I told you what's beautiful about web development is you just have to learn JavaScript, and after that it's just refreshing your concept of it. तो अगर आपने एक बार जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है तो यू कैन लर्न एंगुलर, यू कैन लर्न रिएक्ट विद इन अ वीक और विद इन 2 weeks. दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, बट स्टिल जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पता होंगे तो ये सब सीखना काफी इजी होता है. नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट इज बेटर, रिएक्ट और एंगुलर? करंट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से आई वुड रिकमेंड यू शुड स्टार्ट विथ रिएक्ट, बट बिफोर रिएक्ट आई शुड रिकमेंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स कंप्लीट करना, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग रिएक्ट. But that holds true for the current market trends. अभी React developers की जो नीड है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट जब तक आप पास आउट होंगे तब तक हो सकता है मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और उसके डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, गो विद द फ्लो. लाइक मार्केट के साथ जाना चाहिए. मार्केट में जो चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है हमको उस पर फोकस करना चाहिए और उसको लर्न करना चाहिए. लाइक what I do is when I started my career, I started with Panic, but with things changing, time changing, job switching, I had to I was in situations where I had to, मैं सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करता था, उसके बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं पढ़ाई करता था about these new frameworks and technologies, so that I can provide my input in my job so that जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ that works better. So it's about current market trends and technologies that you want to learn or that you need to learn according to those trends. So to answer your question, React is better than Angular for now, and that also depends on project requirements. अगर आप काफी बड़ा project कर रहे हो, then Angular is good. The big companies that use Angular, और कुछ ऐसा project है जो छोटा है, जो manageable है, जो उतना ज़्यादा scale नहीं करेगा, जिसमें millions और trillions of user आने वाले हैं, तो I think React is best. So, okay. Any other questions, or should I move on? So my last question. So my question would be, apart from JavaScript, what are your thoughts about frameworks like Django and in Python language? Okay, Python is a pretty good language. I say, like हमने जो ग्राफ में देखा था, एक बार फिर से देखते हैं उसको. Python stands on the 4th number, and SQL is just a database query language, right? So it doesn't stand for a pretty much coding language. But Python, yeah, it's on 3rd number. So Python is a very good language, but it has its own specific purpose.
that JavaScript does not serve. So if you want to make your career in artificial intelligence, machine learning, and that kind of field like data science, data engineer, right? So Python is a pretty good language, and Django is I guess I don't have much idea about Django, but yeah, what I know about it, it's a UI framework for Python, right? To, develop websites and all that stuff. So Python is not specialized in doing web development. It has its forte in, what do you say, artificial intelligence, machine learning. Then that is also because उसमें बहुत सारी libraries pre-built available होती हैं आपके पास. So that's why you can use those libraries and implement your program or implement your artificial intelligence module over there in Python, which is not available for other languages. So that's why Python is better for that. But when you talk about web development, I'll recommend you to learn JavaScript and do web development. Python is not a best fit for it. It can work, but it's not the best fit. Sir, Huh? Sir, before internship, how the students are selected for internship by taking aptitude test or by seeing the resume that which skills are जिन स्टूडेंट्स का स्किल अच्छा रहता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं इंटर्नशिप के लिए कैसे सिलेक्ट होता है Okay, so it depends on company to company वो लोग कैसे लेते हैं. जैसे in my case जब company college में आती है तब aptitude test होता है. But when you sit on your open not campus, when you are on an on-site interview, like company में जाके आप interview देते हो, तब they don't take your aptitude test. There are just a couple of interview rounds and then they select you. So in internship also there is also interview round. हाँ, there is means किसी भी type के recruitment में there are interviews. So it's not like that कि आपने aptitude test दिया and it went well and you are selected. No, there's gonna be interview surely. So interview तो होना ही है. Once अगर एक बार ऐसा होगा कि aptitude test नहीं होगा, but interview तो होगा ही होगा. Yes, sir. So do start preparing for that as well, like interviews. Not now, मतलब ये चीज अगर आप फाइनल ईयर में जाके करोगे तभी इट विल वर्क. एंड अदरवाइज कॉलेज में काफी सही लेवल की ट्रेनिंग्स और एप्टीट्यूड वगैरह कवर If किया we जाता है. prepare interview questions just now, then it will be no problem for final year. Okay, so you अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने से आई डोंट सी अ पॉइंट इन दैट बिकॉज उसका अभी यूटिलिटी नहीं है, राइट? यू आर एनीवे गोना गिव इंटरव्यूज इन योर फाइनल ईयर ओनली. तो इट वुड बी बेटर अगर आप उसको तब प्रिपेयर करें बिकॉज तब वो For टॉप ऑफ. internship, हाँ, internship के लिए if you want, you can, yes, you can prepare for interviews right now and you can jump into internships right now. So start posting your resumes on forums, on company, start mailing your resumes, putting it on links, when put it on interviewer LinkedIn. ask such questions at the time of interview, then the skills which is mentioned in resume, that type of skills, these skills are on the base of skills companies ask such questions. Yeah, that's right. So if you have mentioned like Java, then they'll ask questions about Java only. If you written MySQL, they'll ask questions about MySQL. It's not like that okay, you have written Java and they're asking you about MongoDB or Node.js or something like that. So जो आपने लिखा है, जो आपको आता है, they'll ask you about that only. और अगर वो कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जो आपको नहीं आता, They will not ask to code to do code. That also depends. Like that depends on company to company basis. We were means हमको बोला था code करने का when we were recruited to Hotwax. So there is a 90-minute machine test. I'll come on to that later. Okay, what things are asked in the interview about what is problem solving, why you should learn data structures and algorithm and all that stuff, and why is web development important and everything. So मैं आने वाला हूँ उस पे भी कि what they ask in the interview, either in internship or in a real job. Right? Yes. Okay. Sir. Yes. Sir, have you done any kind of CP before you entered in this field? Unfortunately, that's the biggest mistake of my life. I didn't indulge into CP or problem solving kind of stuff, and now I'm paying for it. So अब start करा है मैंने. I started just like 3 months ago about CP and everything. CP is competitive programming, by the way, that you do on LeetCode, HackerRank, and everything, every other platform out there. So every big company, that you can imagine, Amazon, Google, Facebook, Netflix,
जो कि काफी अच्छी कंपनी है, दोज आर द ड्रीम कंपनीज ऑफ पीपल, एंड उनमें जॉब मिलना काफी मुश्किल होता है। वो कंपनीज कभी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछेंगी, मतलब दे आस्क यू बट इन जस्ट वन इंटरव्यू, और उनके 5-5 6-6 इंटरव्यूज होते हैं। बाकी के इंटरव्यूज में दे जस्ट आस्क अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डिजाइंस. So that why I said that it's the biggest mistake, because I failed my last round of Amazon interview a couple of months ago just because of this, because मेरी competitive programming की उतनी practice थी ही नहीं उस time पे. I was just into web development, learning web technologies and everything. So I cleared the first 3 rounds of it, जो कि purely इसी चीज पे based थे कि what is web technology and React and Angular and everything about that. So I cleared the initial 3 rounds, but last round was about solving a hard lead code problem in 45 minutes. So if anyone does competitive programming or problem solving here, उनको समझ में आ रहा होगा what is a hard level problem on lead code. So वो solve नहीं कर पाया मैं, so that's why I was rejected from Amazon. So one of the reason you should also look into that. I'll come on to that कि क्या क्या आपको prepare करना है in the next 2 years, so that you are ready to get employed in a well paying and high paying well company, right? Does that answer your question, Akshay? Yes, sir. So just one more Okay. thing, that both the Yeah. things are web development and CP, both are of equal importance, or there is some precedence? In my opinion, both are of equal important. But when you look at from a job perspective, ना कि आप जब day to day काम कर रहे हो, let's say I work on Paytm movies, so जब मैं Paytm movies develop करता हूँ, तो what I utilize the most is मेरे web development के concepts के React में ये चीज ऐसे होती है. I use that 90% of the time. But this what do you say, problem solving skills or competitive programming this is used in most of your system design techniques or interviews. Mostly interviews में इस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग. This is because इंटरव्यू में दे हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम, लाइक 1 घंटा होता है उनके पास. वो तुमको कैसे ही जज कर लेंगे अगर लेट्स से तुमने 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड दे आस्क यू ऑन रिएक्ट, आप कुछ भी आंसर कर सकते हो क्योंकि उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है. बट इफ दे गिव यू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन और अगर आप उसको 1 घंटे में सॉल्व कर पाते हो, देन दे नो के दिस गाय अगर इसको रिएक्ट नहीं भी पता है देन ही इज एबल इनफ कि वो उसको 1 महीने या 1 हफ्ते में पढ़ के और काम करना शुरू कर सकता है. So that's what they judge in the interview, right? So both of the things are of equal importance. एक है जो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में मदद करेगा, वैसे तो दोनों ही करते हैं, और दूसरा जो है वो आपको डे टू डे जॉब में हेल्प करेगा. Okay? Sir, both are needed for a developer. Yeah. Both are needed. Okay, sir. Thank you. Okay. Let's move forward. The third Q, how can I make a career in it? So as I mentioned, there are 3 types of web developers: front-end developer, back-end developer, and a full-stack developer. So front-end developer is someone who specializes in developing front-end only. फ्रंट-एंड वो होता है जो आप अपने स्क्रीन्स पे देखते हो व्हेन यू गो ऑन netflix.com. तो जो आपको मूवीज के लिस्ट दिखती है, सीरीज के लिस्ट दिखती है, जो आपको थंबनेल्स दिखते हैं, इमेजेस दिखते हैं, दैट इज कंप्लीट फ्रंट एंड. जो उस चीज को सिर्फ उस चीज को डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रंट एंड इंजीनियर, राइट? They are responsible for creating the look and feel, the interactive components of a website. That's what is written here. उसके बाद there is a backend developer. Backend developer is responsible जो server side पे code लिखता है. Server side as in databases. I hope you guys know about the client server architecture, right? There is a client, there is a server, and there is a database. And तो जो client पे काम, yeah. Yes. I think your PPT is not visible. Okay, now it is visible. Is it visible now? Yeah. Okay. Yeah. So the client server architecture has 3 things, like a client, a server, and a database. So from a client you request something, वो server के पास जाता है, server processes it, gets the data from database and returns it to client. तो जो इंसान client पे काम करता है, that is a front end developer. जो इंसान सर्वर साइड पे काम करता है, दैट इज अ बैक एंड डेवलपर. वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, उसके बेसिस पे डेटा डेटाबेस से फेच करके लाना है और फिर उसको वापस क्लाइंट पे पहुंचाना है. दैट इज अ बैक एंड डेवलपर. एंड देयर इज वन दैट इज कॉल्ड एज अ फुल स्टैक डेवलपर, जो दोनों जगह पे काम कर सकता है. तो दैट्स व्हाई when you compare the salaries of a front end, a back end, and a full stack developer always has an upper edge because they can do both. So a company wants to hire such kind of people जो 2 लोगों की सैलरी में, मतलब
एक इंसान की सैलरी में 2 लोगों का काम कर पाए. So that's what the thought process of companies is. So you need to learn, and the best way to learn is again JavaScript, because that's the language that can run on client as well, that can run on server side as well, or yeah, that can run on clients and server both. So that makes you a full stack developer. Okay. Next, let's start from here. Next, I have a small quiz around. I have around 10 logos of technologies here, and let's see how many of you can guess. Just do one thing: go into the chat and put your score. Like 10 में से कितने पता है आपको? I see if anyone can get 10 out of 10. Put in the chat like, and if you can name them, that's also better. Like 10 on 10 लिख के नीचे नाम भी लिख सकते हो तो better है. I'll give you 1 or 1.5 minute of this for this. और एक ही मैसेज में टाइप करना, एक मैसेज टाइप करके एंटर मत करना, वरना वो मिक्सअप हो जाएगा फिर. Like it's 2:50 right now. We'll wait till 2:51. अगर किसी का 10 on 10 आता, that's pretty good, very impressive kind of thing. And like that guy or that girl is already on an advanced level. Like knowing things is more important than learning things. आपको पता होगा तभी आप उसको सीख पाओगे, right? And that's why I am here today, like to let you know some things that you don't know, so that you can learn those things and you can have an upper edge in the industry. Okay, time up. 10 on 10. Aman Sonwani, 1 JavaScript. 10 on 10 for Rupak again. 6 on 10 for Tanul. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. That is great. So 10 on 10 वालों से बात करते हैं. Guys, please unmute yourself, Aman, and name them one by one. Let's verify once. Angular, React, वो show me the logos. हाँ, yeah. Angular, React. दिख रहा है क्या? Show me the icons. सर आइकन नहीं दिख रहा. एक सेकंड. अब दिख रहा है? नहीं सर. अब दिख रहा है सर. Cool. हाँ, Angular, React. Angular, React, Vue, Electron, Bootstrap, CSS, HTML, JavaScript, और उसके बाद Node.js और MongoDB. Okay, the fourth one is not Electron. Ionic है वो. Yeah, exactly. Okay, और कौन था 10 on 10? बाकी अब तो ठीक है, आंसर पता चल ही गए. So okay, ठीक है. Well done, boys. Aman and Rupak. Cool. So these are the languages that are. अभी presentation दिख रहा है या अभी भी कॉल वाली स्क्रीन दिख रही है? दिख रहा है. Okay, cool. हाँ, ठीक है. So these are the major web technologies जो कि आजकल कंपनीज में यूज हो रही है. So how do I make a career in web development में एक पॉइंट ये भी आता है कि क्या क्या सीखना चाहिए. तो someone अभी asked के Angular better है या React. तो these are all the technologies available. It's not just Angular, React, Svelte, Next, Vue. ऐसे मार्केट में हर 2-3 महीने में एक नया फ्रेमवर्क आ जाता है. एंड कंपनीज यूज दोस फ्रेमवर्क्स एज वेल. बट कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे होते हैं जो बड़े टेक जायंट्स बैक करते हैं. लाइक एंगुलर इज बैक्ड बाय गूगल एंड रिएक्ट इज बैक्ड बाय फेसबुक, राइट? सो कंपनीज रिलाई ऑन दीज बिकॉज ये लंबे टाइम तक चलने वाले हैं. दैट्स व्हाई दीज आर पॉपुलर दीज डेज, राइट? तो learn about these technologies. मार्केट में देखो क्या चल रहा है. नहीं है तो connect with seniors like me. अपने faculty से बात करो. Ask them to get you guys connected with the alumni and someone from the alumni so that they can guide you about these things के क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अभी क्या important है, अभी क्या important है. Because second year you have, आपको लग रहा होगा कि 2 साल हैं अभी, but you have very less time. 2 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. एंड फाइनल ईयर में आके जब पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये सब पढ़ना चाहिए था, तब टाइम नहीं बचेगा, राइट? सो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, मुझे सिर्फ 2 चीजें बताई थी मेरे सीनियर ने कि लर्न अबाउट बूटस्ट्रैप एंड लर्न अबाउट MongoDB. तो आई लर्न दोस टेक्नोलॉजीज और उन्होंने काफी बाद में जाके हेल्प किया मेरे को. सो दीज आर सम very popular web technologies: Angular, React, Vue, Ionic, Bootstrap. I'll just reiterate: HTML5, CSS3, JS, Node.js and MongoDB. So the above ones, these are called front end. तो हमने जो अभी
पीछे देखा था टाइप्स ऑफ डेवलपर्स में, तो फ्रंट एंड डेवलपर्स बेसिकली वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, और बैक एंड डेवलपर्स जो होते हैं वो इन टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं. नॉट नेसेसरी ये वाली, इनके अलावा भी हो सकती हैं, बट दीज आर द मेजर वंस. ठीक है. सो Excuse me, sir. या वैसे कुछ कंपनीज में ऐसे भी काम होते हैं कि फ्लाश, डिजेंगो वगैरह ऐसे भी काम देते हैं, काम करते हैं कुछ कंपनीज में. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं कुछ कंपनीज में. तो पर वैसे कोई सीखना जरूरी नहीं है सिर्फ कि मोंगोडीबी सीख लो, ऐसे कंपलसरी कोई सीखना जरूरी नहीं कि एंग्लरजेस सीख लो. नहीं नहीं नहीं, नथिंग इज कंपलसरी इन दिस. जो मैं अभी बता रहा हूँ दैट इट इज नथिंग कंपलसरी. एज आई मेंशन, ये तुम्हारे अगर करिकुलम वेब में भी नहीं है. डेवलपमेंट में सीखना हो तो सिर्फ खाली आपको कंफर्ट से अगर सीखना हो तो वेब डेवलपमेंट, तो फिर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखना है, और उसके साथ साथ पाइथन में डिजांगो और फिर फ्लास्क सीखना है, उतना ही काफी है. हाँ, बेसिकली तो अगर मेरे आप कंफर्ट में. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप कॉलेज से बाहर आ रहे हो, अभी फाइनल ईयर में हो और आप जस्ट निकले हो और जॉब के लिए जा रहे हो, फ्रेशर हो, तो आपको सिर्फ अगर बेसिक्स पता है ना, तो दैट्स द बेस्ट थिंग. क्योंकि तब आप किसी भी चीज पे काम कर सकते हो. अगर आपको HTML3, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट आता है, तो आप एंगुलर भी, कंपनी आपको एंगुलर सिखा सकती है, आपको रिएक्ट सिखा सकती है, आपको व्यू सिखा सकती है, आपको कुछ भी सिखा सकती है. आप ओपिनियनेटेड नहीं होते हो उस केस में. So that's the best thing, to learn the जब basics first. फ्रेशर्स के लिए तो जाते हैं ना वो जॉब के लिए, वो सिखाते हैं क्या? हाँ, ट्रेनिंग्स होती हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे लाइक इफ यू टॉक हाँ. अबाउट जेंसार और TCS के तो ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है. वो लोग है ना साउथ में कहीं पे उनका सेंटर है, और वहां पे वो लोग वो भेजते हैं 3 सिखाते महीने के हैं, लिए. तो वैसे हाँ स्टूडेंट को वैसे खुद से अपने आप ही नहीं सीखना पड़ता है ना, वो सिखाते हैं वो दूसरे टेक्नोलॉजी से. वो ट्रेनर्स वगैरह सब होते हैं उनके पास, और वही वही लोग सिखाते हैं आपको. बिकॉज दे डिसाइड कि अगर मैंने यहाँ से 100 बच्चे हायर करें, तो मैं 30 लोगों को इस प्रोजेक्ट में डालने वाला हूँ, 30 को उसमें डालने वाला हूँ, और बच्चे 40 को तीसरे प्रोजेक्ट में डाल. तो बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट एलोकेशन ना, दे ट्रेन यू ऑन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, जिस भी टेक्नोलॉजी में वो प्रोजेक्ट होगा, राइट. तो वो ट्रेनिंग होती है आपकी 3 महीने की. उसके बाद यू आर एलोकेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जहाँ पे जाके आपको काम करना होता है. ठीक है, क्लियर? यस सर. ओके, नाउ वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू लर्न. लाइक मैंने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के नाम बता दिए. काफी सारों को ये एलियन लग रहा होगा कि ये क्या चीजें हैं, हमने पहले नाम भी नहीं सुना, और ये कैसे काम करता है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. तो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट दैट, के वेयर टू स्टार्ट. सो इफ यू आर अ बिगिनर, आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में, इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, जस्ट गो टू W3 schools, learn about what HTML is, learn about what CSS is. There is a pretty good documentation out there of HTML and CSS and JavaScript as well. तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, W3 schools, फ्री कोड कैंप, Udemy, यूट्यूब पे दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं. इट्स जस्ट दैट वहाँ पे उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितना W3 पे. दैट्स व्हाई यूट्यूब इज ऑन बॉटम. तो इन सारे वेबसाइट्स का यूज करके आप लोग सीख सकते हो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना, कि कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो बहुत बेसिक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टफ है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो. दैट्स फॉर बिगिनर्स. जो इंटरमीडिएट हैं अभी, जिनको थोड़ा बहुत आता है, जिनको पता है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करता है, फॉर यू गाइज, यू जस्ट either start learning some kind of a framework, let's say React or Angular, and start doing some pet projects out of it. Pet projects से मेरा मतलब है URL shortener बना दिया, कुछ छोटा सा खुद का कैलकुलेटर टाइप का बना दिया, कुछ टाइमर टाइप का ऐप बना दिया. ऐसे छोटे मोटे ऐप्स बनाओ और उनको कहीं पे रखो, मतलब डिप्लॉय करके रखो, जैसे गिटहब पे, हेरोकू पे. दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन डिप्लॉय योर कोड, राइट. और जो वेब पे दिखता है, like if you see my website, it is deployed on GitHub pages and Heroku. तो वहाँ पे I can give a link to anyone और वो जाके देख सकते हैं उसको. So that is a good showcase of your skills, कि आपको ये चीज आती है और आपने ये चीज बना के वहां तक पहुंचाई है. That is a end-to-end process, right? तो जब आप आपके resume में लिखते हो कि I created a pet project of a URL shortener and deployed it on Heroku, और नीचे उसका लिंक देते हो, तो रिक्रूटर का इमीडिएट अटेंशन वहां पे जाता है, and he sees के अच्छा, okay, he has done a project and he has also deployed it. So that is a pretty impressive thing. सीधे आपकी रैंकिंग अगर 100 में से करनी है, तो आपकी रैंकिंग टॉप 10 में तभी आ गई जब आपने कोई प्रोजेक्ट दिखा दिया विद अ लिंक इन योर रेज्यूमे. अगर एक एक इंसान के पास एक एक रेज्यूमे, एक अपने रेज्यूमे में एक एक लिंक भी है ना, तो देयर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी कि आप लोग का रिक्रूटमेंट हो जाएगा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दैट. काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है, और बहुत सारे लोग बीच में गिव अप कर जाते हैं. सो द वन जो आखिर तक पहुंचता है, उसके 95% चांसेस होते हैं रिक्रूट होने के. ओके,
और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मतलब अगर आप एडवांस लेवल पे हो, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना रखे हैं, then start doing freelancing, start going for open source contributions, internship। open source contributions के बारे में किसी को पता है, कोई बताना चाहता है what is open source और what is open source contributions about? मतलब है स्मार्ट बच्चे, किसी ने मेरे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा तो डेफिनेटली फिर गिटहब और ओपन सोर्स के बारे में पता होगा। जीसॉक के बारे में पता है मुझे। जीसॉक के बारे में पता है, ग्रेट। पार्टिसिपेट किया है किसी ने? तुमने किया है पार्टिसिपेट कभी उसमें? नहीं सर, प्रिपेयर किया था बट कर नहीं पाया था मैं। ओके ओके, ट्राई फॉर दैट। अच्छी चीज़ है वो। अगर इफ़ यू गेट अ चांस फॉर जीसॉक ना, और इफ़ यू डू पार्टिसिपेट इन इट, तो वो रैंक टॉप 10 की जगह टॉप 5 में आ जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू एक्चुअली। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस? किसी को पता है क्या होता है? सर जैसे गिटहब पे अलग अलग ओपन सोर्स रिपोजिटरी होती है, पब्लिक रिपोजिटरीज होती है, तो उसमें अपन जाके मतलब फोक करके उनका कोड अपन कुछ चेंज करके उनको ऑप्टिमाइज करके अगर अपन उनको पुश कर दे, मतलब कमिट कर दे, और उनको फिर एक पुल रिक्वेस्ट जाती है, अगर वो मर्ज कर दे तो वहां पे अपनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है। एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे मतलब कई सारे फेस्ट वगैरह होते हैं, लाइक एक हैक्टोबर फेस्ट होता है, मतलब राइट। डिजिटल ओशन करवाता है इसको। हाँ तो उसमें भी ऐसा रहता है कि अगर अपन 10 गिट कमिट्स वो कर दे, मर्ज करवा दे, तो वो अपने को कुछ गुडीज भेजते हैं या कुछ टी टी शर्ट शर्ट वगैरह आता भेजते है, राइट। मेरे को लास्ट हैं। 3 साल से आ रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, लाइक हैक्टोबर फेस्ट। सो बेसिकली द थिंग इज कि अगर आपको आपके रेज्यूमे को स्टैंड आउट करना है और एकदम 100% श्योरिटी चाहिए, तो यू डू दीज थिंग्स। लाइक इवन ऑन द लेवल ऑन विच आई एम, मैं मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस या 6 साल का एक्सपीरियंस इस बंदे को है, और अगर उसके रेज्यूमे में कहीं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन दिखता है, लाइक आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस और ये दैट, तो रिक्रूटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब क्लोज टू 100% ही मान लो। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल लिनक्स है। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स एज इन उसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है खुद के एंड पे, बट उसको ओरिजिनल लिनक्स के कोड में डालने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ परमिशन। जो उसके ओनर्स हैं उनको आपको प्रपोज करना पड़ता है कि भाई ये चेंजेस मैं करना चाहता हूँ, दीज आर द ऑप्टिमाइजेशंस दैट आई मेड। और अगर उनको वो सही लगते हैं तो आपका कोड फिर लिनक्स में जाता है, और फिर जो इंसान लिनक्स इंस्टॉल करेगा वो आपका कोड रन करेगा, राइट। तो दैट्स द लेवल जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आपको दे सकते हैं, एंड इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। आप github.com पे जाओ, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करो और आप स्टार्ट कर सकते हो ये चीज करना। तो इफ यू डू दीज काइंड ऑफ स्टफ ना, ये बहुत मतलब मुश्किल चीज है, मुश्किल तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर आप प्रैक्टिस में ले आए तो आसान लगेगा, बट स्टार्ट करने के लिए मुश्किल है। इवन आई ट्राइड डूइंग दिस। मैं 1-2 कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद ज्यादा कर ही नहीं पाया, बिकॉज इट टेक्स सम काइंड ऑफ टाइम। और उससे क्या होता है, अभी तक हम सिर्फ कोड सीखते आए थे, अब हम लोग क्या करते हैं, हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, और फिर बहुत सारे लोग हमारे कोड को रिव्यू करते हैं, वो हमको सजेशंस देते हैं, ये सब करते हैं, तो वी बिकम अ गुड डेवलपर इन दैट प्रोसेस, राइट। अभी तक हम सिर्फ डेवलपर बन रहे थे, अब हमको गुड और बेटर डेवलपर बनना है, राइट। तो दैट इज फॉर एडवांस्ड। तो फ्रीलांसिंग करो, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, और इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई करना इज ऑन एडवांस लेवल, राइट। तो पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा, उसके बाद ओनली यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप्स, अदरवाइज देयर आर चांसेस कि आपके रेज्यूमे रिजेक्ट होकर वापस आने वाले हैं। So do this first, beginner and intermediate, then go for advanced. So this is where to start, and where can you reach is ये वापस से वही वाला स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं जहाँ पे सैलरी दिखाया था। So this is something, this is the end goal, means you can earn this much. What I see is हम लोग का कॉलेज इंदौर में, इंदौर इज अ टियर 2 सिटी, राइट। टियर 1 सिटीज आर द बिग सिटीज लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, राइट। तो वहां पे आती हैं बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये लोग सब बड़ी कंपनीज बड़े कॉलेजेस में जाती हैं। बट वेयर वी आर, हमारे कॉलेज में जो कंपनी आती है दैट आर नॉट बैड, वो भी काफी अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे टीसीएस, एनसार और ये सारी जो कंपनीज आती है, दीज आर ऑल सर्विस बेस्ड कंपनीज, राइट। एंड वहां से आप आपका करियर स्टार्ट कर सकते हो, बट हमारा जो एवरेज पैकेज होता है वो नियरली 4 से 8 के बीच में होता है। तो अगर हमारे पास ये सारी स्किल्स हैं और हम अपने करियर का जो पाथ है वो सही से नर्चर कर रहे हैं, मतलब सही टाइम पे सही डिसीजंस लेके स्विचेस कर रहे हैं, तो वी कैन रीच एट दिस पॉइंट वेरी इजीली। मींस in 5 to 6 year you can reach this if you take the right decisions in your life, or if you start right. So this is all about making a career in web development. Thanks a lot. If you have any questions you can ask.
Otherwise, we can drop. Students, any question? No, ma'am. Excuse me, sir. Yeah. Sir, can you please explain something about freelancing? How we can start freelancing in web development? Yeah, definitely. So freelancing, as I mentioned, it's on the advanced level. So आपको पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उस चीज के लिए, and then there are websites like freelancer.in, Upwork, Fiverr, right? You might not know about these websites. You might know about these websites. What they do is वहाँ पर people post their projects. Okay, I want to get this thing done in this technology. और फिर the other people like us, the developers, they bid on that. Okay, I can do this in this amount and this much time. और फिर वो प्रोजेक्ट आपको अलॉट होता है. So that's where you can start freelancing. I also started from there. I did a 5 to 6 projects on freelancer.in, and that is a pretty good website. वो लोग बीच में से कुछ कमीशन लेते हैं, but you establish yourself as a brand, right? Okay, this is a developer that can deliver projects. So these are the websites like Fiverr, Freelancer, and Upwork. कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, यू आर 3 or 4 गाइज जो कि सिंक में काम कर सकते हो अच्छे से, गो फॉर अपवर्क. इफ यू आर अ सिंगल पर्सन जो छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता है, गो फॉर फ्रीलांसर एंड फाइवर. उसके अलावा इफ यू वांट यू कैन these are online platforms. Offline भी कर सकते हो if you have some मतलब acquaintances or relatives or something. So start to talking with them, pitch them के आपको website बना के दे सकते हैं. You can have a website, you can have a system for your shop and this some things like that. So get your local contacts also up, talk to them, tell them that you are capable of developing things, and then they automatically will come back to you. So this happened with me. Like I was developing Android applications, and then I started posting it on social media about this. I developed this, I developed that, and then people started coming to me, can you develop this for me, can you develop that for me? So that also happens. So social media means building your profile on social media is also a very important part of this. So building your own website and maintaining it and keeping it updated is also a very major part of it. Okay, sir. Thank you. Okay, cool. Any other questions? हेलो सर. या तो जॉब के बीच में लैंग्वेज स्विच करना कितना डिफिकल्ट टास्क हो सकता है? नहीं, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू के तुम कितने वर्सेटाइल हो. सी, जॉब के बीच में लैंग्वेज स्विच करना इज अ सिनेरियो. आई विल एक्सप्लेन यू क्या होता है. ओके, इन द डे टाइम 9 to 5 you do a job which is on, let's say, technology X. Now you want to switch to technology Y. तो 9 to 5 आप X पे काम कर रहे हो, उसके बाद आप घर आ रहे हो, एंड लाइक 7 to 10 और 8 to 11 और समथिंग लाइक दैट आप Y पे काम कर रहे हो. सो इट्स अप टू यू कि आप Y को कितना जल्दी सीख सकते हो, एंड देन यू कैन गो ऑन इन योर ऑफिस जहाँ पे Y यूज हो रहा है, बट यू आर नॉट working on that. So you can tell your leadership management, or you can talk to your co-workers and start working on that. So switching is not at all difficult. You can, like I also tried once and it was very successful attempt, but अभी जिस कंपनी में वहाँ पे वो Spring Boot पे काम नहीं करते. In my earlier company Mastercard, I used to work on front end only, but later on I thought of learning back end. Like Node.js आता था मुझे, but I had to learn Spring Boot. So I went on Udemy, purchased a course on Spring Boot and finished the course in like a couple of weeks. Then I went back, talked to my manager, talked to my lead, and told them कि मैंने ये पढ़ा है and I want some work in this. So in IT company people are very flexible and they get very happy when you show such kind of progress or such kind of interest. So they allotted me some work from that team, and then I started working on it. Or सिर्फ पढ़ना is not enough. You have to have some kind of you need to do some kind of practice on that as well. तभी वो चीज याद रहती है. So they gave me some work, I started working on it, and then I get used to Spring Boot. So उसके बाद I used to work on both the technologies, like front end and back end. तब तक I was only front end developer. After that I used to work on back end as well. So now I became full stack developer. So when I switched, I changed my profile from a front end developer to a full stack developer. So it's not that tough. It completely depends on your capacity to, मतलब आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो. Thank you, sir. Sir? Yeah.
Sir, as you said that problem solving skills are also very important in placement. So, sir, how Yeah. to balance competitive coding and web development together? Good question. So I just almost forgot to mention competitive coding and problem solving. I mentioned earlier कि मैं बताने वाला हूँ last में. So how to balance is something like वेब डेवलपमेंट वो चीज़ है जो आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया तो आपको आ जाएगा. मतलब फिर अगर आपने उसमें 2 महीने या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते काम नहीं भी करा तो, और अगर चौथे हफ्ते में आपने काम स्टार्ट करा है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, आप कोड लिख पाओगे. बट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन थिंग जो आपने 1 महीने करा और फिर 1 महीने का गैप दे दिया और फिर वापस से पिक करा तो आप वापस जीरो से स्टार्ट करते हो उसमें. तो यू नीड टू वो चीज लेती है प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो आई विल हाईली रिकमेंड कि पहले आप वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ लो, उसको समझ लो एंड कीप इट असाइड, क्योंकि वो बाद में भी अगर आप रिकॉल करोगे तो आराम से याद हो जाएगा और थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होंगे जो कि आप गूगल करके समझ सकते हो. बट दिस कॉम्पिटेटिव कोडिंग दिस रिक्वायर सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस पूरे टाइम. तो अगर आप अभी से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो फाइनल ईयर तक जाते जाते यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट हार्ड प्रॉब्लम इन 45 मिनट दैट आई वाजंट एबल टू डू. तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इज समथिंग जो आपको डेली एक दो क्वेश्चंस करना चाहिए, या मे बी डेली टाइम नहीं मिल रहा तो सिट ऑन अ वीकेंड, डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस और 3 or 4 क्वेश्चंस ऑन वीकेंड ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग. और ड्यूरिंग द वीक आप शाम को 1 घंटा या आधा घंटा आप पढ़ सकते हो अबाउट वेब डेवलपमेंट. Thank you, sir. या Okay. any other questions or should we, like, we are overshooting for 10 minutes? Any other questions? I think no more question. So thank you so much, Rachel, for taking such a wonderful and knowledgeable and interactive session. Now I would like to invite Professor Rahul Patel, Associate Professor, CSC Department, to propose a vote of thanks. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes. Yeah. Okay, thank you. Good afternoon, one and all. On behalf of Acropolis Institute of Technology and Research, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly or indirectly contributed to this webinar on making a career in web development, organized by CSC department. At the outset, I thank our speaker and prominent resource person, Mr. Prasil Choni, Senior Full Stack Engineer at Paytm Insider, Pune, Maharashtra. We are really enlightened by your knowledge and presence. I must say that your session is very knowledgeable and very interactive. I also extend my thanks to Dr. Kamal Kumar Sethi, sir, Professor and Head CSC Department, for his support and valuable guidance. Last but not the least, I would like to thank our students and faculty members for their active participation. Thank you, everyone. Over to you, Kavita ma'am. Thank you so much, sir. A heartfelt gratitude to Prashil for sparing your valuable time to mentor our participants. We will look forward to future opportunities for collaboration with you for advanced teaching and learning. Thank you, everyone, and good day. Thank you so much. Thank you very much, Prashil Soni. Thank you sir, thank you for inviting me here.